we've been talking about the development of a personality, and the last one that we discussed was integrity. And the last in integrity was doing the right thing even when it is convenient. Integrity is how you live your life based on certain principles. And when the test of that principle comes, you do not shy away from it. यानी आपने अपनी जिंदगी में असूल बनाया, मिसाल के तौर पे, कि मैं अपनी जिंदगी ईमानदारी से बसर करूंगा, और जिस रोज आपको यह पता चला कि अगर आपने ईमानदारी की तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, उस दिन आप बेईमानी पे आ गए, तो उस असूल का क्या फायदा हुआ? और वो किस लिए बनाया? इसका मतलब यह है कि आपका उसूल ईमानदारी नहीं था, आपका उसूल क्या था? मफाद परस्ती। आप अपने मफाद के लिए, जब तक आपको फायदा हो रहा था तो आप ईमानदार बने रहे, और जैसे ही आपको नुकसान होने लगा तो आप बेईमानी शुरू हो गए। तो ये असूल तो ना हुआ, ये कोई प्रिंसिपल स्टैंड तो नहीं है, ये तो जस्ट लिविंग लाइक एन एनिमल है कि जहां पर अपना मतलब नजर आया उस तरफ चल पड़े। तो इंटेग्रिटी जो है वो ये, दिस इज व्हाट इज इंटेग्रिटी, दैट इट स्टैंडिंग ऑन द प्रिंसिपल्स firmly, and this is a great ability. This ability is also found in most of the successful people of the world. ये वो क्वालिटी है जो आज की दुनिया में भी जो कामयाब तरीन लोग हैं उनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो असूल वज़ा करते हैं अपने लिए. दे मेक सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉर देमसेल्व्स, सेल्फ गवर्निंग प्रिंसिपल्स. These are not laws made by the government or by anybody or the society, but they make those principles for themselves to act upon them. And they are good principles. And then, whether it is day or night, good or bad, profit or loss, whatever the outcome may be, they do not shy away from those principles. They take a stand, and this is what is required in our country as a nation. You are too young to be able to apply these things, but still in your daily lives you can make principles for yourself. अपने लिए कोई असूल, कोई ज़ाब्ते खुद बनाएं, बजाय इसके कि कोई दूसरा आपको रेगुलेट करे. जैसे हमारे माँ बाप हमें कह रहे होते हैं, चल ऐ कर, ऐ ना कर, ये मत करो, ये करो, यानी वो हमारे लिए डूज एंड डोंट्स तय कर रहे होते हैं और हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते. हमें पसंद नहीं आ रहा होता कि ये हमें क्यों ये कह रहे हैं, आई डोंट लाइक इट. बट व्हाट इज बेटर देन, द बेटर थिंग इज यू योरसेल्फ फाइंड आउट व्हाट इज राइट फॉर यू. अपने लिए खुद ढूंढ लेना, बजाय इसके कि आपको आपके वालिदैन धक्के मार मार के कहते रहें कि तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तू इंज कर, तू उंज कर, और आपसे वो होता नहीं है तो फिर डांटे पड़ती हैं. कुछ लोगों को कुटापा भी पड़ जाता है. तो उस तरफ बात जाने देने से पहले होना ये चाहिए असल में कि आप चूंकि इंसान हैं, तवक्को तो मेरी यही है, हिप्पोपोटेटमस तो नहीं है, तो इंसान है. तो इंसान होने के नाते आपके पास ये सलाहियत है, अल्लाह ने आपको दी हुई है कि आप अपने लिए खुद कुछ असूल वज़ा करें कि तुम किसी के को जुगत नहीं मारोगे. क्यों नहीं मारोगे? इसलिए कि ये बुरी चीज़ है, ये दूसरे को तकलीफ देती है, ये दूसरे की रूह पर जख्म लगाती है. एक जख्म वो होते हैं जो हम थप्पड़ मारते हैं या मुक्का मारते हैं या लात मारते हैं, तो जो फिजिकल जख्म होते हैं एक वो होते हैं, और एक होते हैं लफ्ज़ों से लगाए हुए जख्म, अल्फाज के जरिए जो हम दूसरों को तकलीफ देते हैं. जब आपका कोई मजाक उड़ाए जिसमें कि मकसद ही तज़हीक हो, यानी आपकी बेइज्जती करना मकसद हो, तो क्या उससे आप गुलो गुलनार हो जाएंगे? आप खुशी की फुलझड़ियां फूटने लगेंगी आप में? नहीं ना. आपको क्या होगा? दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी आपको.
आपको बुरा महसूस होगा। एनी हाउ, सो इंटेग्रिटी इज setting up those principles and boundaries yourself and safeguarding them and holding on to them no matter what the circumstances, no matter what the conditions. There are other qualities also which give us a lot of which help us to improve our character a lot. Now there is one ability, one quality which I think is good for all those who want to open up their horizons. यानी कोई शख्स अगर वाकई अपने बारे में या अपने आप को रियली एक्सप्लोर करना चाहता है, तो एक ऐसी एबिलिटी है कि जो उसको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। अब वो उसके साथ इशू ये है, उस एबिलिटी के साथ, कि उसके अंदर आपको रोजाना इंडल्ज होना पड़ता है परसिस्टेंटली, और उसको टाइम देना पड़ता है, बिकॉज वो एकदम से ओपन अप नहीं होती। इट टेक्स टाइम टू डेवलप। देखो बात यह है, आम का दरख्त जो होता है या कोई भी फलदार दरख्त मिसाल के तौर पर, हम अगर उसका एक पौधा लगाते हैं या हम उसका बीज डालते हैं, तो एक बीज होता है, एक पौधा होता है। फिर उसके साथ क्या होता है कि एक वक्त आता है कि वो एक मन फल देता है, एक बीज से एक मन फल निकलता है। वो दरमियान में क्या होता है? दरमियान में वक्त लगता है, प्रोसेस होता है, एक पूरा एक अमल होता है कि जिसके जरिए वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, फलता है, फूलता है। बेसिकली इसमें जो एलिमेंट ऑफ टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ग्रोथ में, किसी भी चीज की ग्रोथ में, द एलिमेंट ऑफ टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। परसिस्टेंस एंड टाइम, यानी आप परसिस्टेंटली एक काम करते रहें एक लंबे अरसे तक, आपके सामने वो काम खुल जाएगा, आपको उस काम में कामयाबी हासिल हो जाएगी। ये बात याद रखिए, ये पक्का असूल है एक्सीलेंस का। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस किसको कहते हैं? व्हाट इज एक्सीलेंस? Yes, anyone who wants to try? वो तो एक्सीलेंट होता है, एक्सीलेंस क्या हुआ? काबिलियत, दिस इज क्वाइट क्लोजर। बेहतरी, एक्सीलेंस होता है। एनीवन एल्स? ओके, एक्सीलेंस है सिर्फ काबिल होना नहीं, सबसे ज्यादा काबिल होना। मीन्स रीचिंग द टॉप ऑफ द पिरामिड, बीइंग द बेस्ट, बिकमिंग द बेस्ट, दैट इज एक्सीलेंस। देखो होता है ना गुड, बेटर, बेस्ट, और उसके बाद क्या होता है? एक्सीलेंट भी होता है। ऐसे ही है। सो डिग्रीज ऑफ एवरीथिंग, अच्छाई की भी डिग्रीज होती है। जो एक्सीलेंस है, यू बिकम master of anything, you become completely skilled about anything, that is called excellence. That I have achieved excellence in such and such field, such and such project, such and such thing, whatever I have been doing. So achieving excellence is dependent upon two things, and that is time and persistence. You have to remain persistent for a certain period of time to achieve excellence. आपको परसिस्टेंटली, लगातार, यू कीप डूइंग इट। ये टिकटॉक है, ये फेसबुक है, ये यूट्यूब है, एंड ऑल दोज दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दे आर द ग्लेरिंग एग्जांपल्स ऑफ अचीविंग एक्सेलेंस। You ask any successful social media personality, they will tell you that the best formula to succeed on the internet is to do what you are doing persistently for a long period of time. That gives you excellence. तो अब हमें excellence अगर required है, तो एक ऐसी ability है कि जो हमें, जिसमें excel करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी opening है. It gives a lot to an individual, जो बाकी किसी क्वालिटी में इतना ज्यादा मैटर नहीं है,
the 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 strength in this quality is beyond measure, and that is gratitude. Did I tell you this story? When Moses was going to talk to God, he met two people. No, I told you that. Do you remember he met a poor man and a rich man? So both of them asked him to pray to God. The poor man wanted more wealth, and the rich man said that Allah has blessed me so much that I do not want any more. Please ask him to stop because it is so much for me. So Moses, when came back, the answer he gave to the rich man was that stop being grateful, stop being thankful. You will lose what you have. And he asked the poor man to have gratitude, to be grateful for what you have. And he said, if you will not be grateful, you will remain like that. So gratefulness, the gratitude. Now, how do you develop that gratitude? The best thing that you can do is every night when you go to bed, start counting what all have you been given free without any of your own effort. What would be the cost of a human eye? What would be the cost of a human eye? एक आंख कितने की होगी? In millions? Okay. $100,000 one eye. Okay. Then what would be the cost of making one eye? It can't be made, but we've got it free. We've got two, not one. Free of cost. Nobody charged us. No, this is gratitude. Being thankful. Can you get this made? A hand? We've got two. The legs, the heart, this whole thing. Free of cost. The trees. Can you get it made from somewhere? We've got it free. So is it not worth being thankful? And then everything is, that we have. We should be thanking it, thankful about it. So when you go back home at night, practice this. Your heart will open up to a lot of new things. You will see things in a different manner. आपको कुछ और ही नजर आने लग जाएगा. अभी मैंने आपको कुछ दिखाया थोड़ा सा. जब आप खुद देखेंगे तो आपको और नजर आएगा. जरा बैठ के सोचिएगा कि क्या क्या मुफ्त में दिया हुआ है. एम ही मिला हुआ है, खामखाई मिला हुआ है, और हम उसको ऐसे बरत रहे हैं जैसे ये मेरे अबू के कारखाने में बना हो. We are dealing with our life as if I have, I had some sort of claim over this life. How many of you have come to this earth by choice? You thought you came by choice? Okay. Is there anyone who came by choice? Okay, if I gave you the choice, for example, would you like to come to this earth? How many would like to come to this earth? Raise your hands. If you were given a choice before being born, for example, Allah asked you that I want to send you to earth. Do you want to go? So, I don't know. Have you seen heaven? Okay. So what is somewhere else? That's the question. Good. You're very intelligent. I like it. So Allah asked you, I again give my question. Allah asked you that I am going to send you to earth. Now, is it
necessary that you were somewhere that Allah asked you. Maybe you were just recently created. You were nowhere. Maybe. But the question is there. If Allah asked you before sending you to earth, do you want to go or not? What would you choose? How many of you would like to come to earth? There are only two people in this whole class who wanted to come to earth. Three. Okay. This is your own choice. I would never come. Why should I come here? For what? Got it? This is my idea. You may have a better idea. But if I would have come, I would have only come to thank thee, to thank Allah, to know the blessings, to find them out, and to be grateful about it. Now, this looks like a religious perspective, but the modern psychology has established that most people who are affected by diseases are those people who are less thankful or who are not thankful at all. So this gratitude has deep effects on our whole body and mind. Okay. See, so जो शुक्रगुजारी है उसके असरात हैं हमारे ज़हन और जिस्म पर, और जिस चीज के हमारे ज़हन और जिस्म पर असरात होते हैं उसके असरात हमारे इर्द गिर्द भी होते हैं. ये मॉडर्न साइकोलॉजी ने एस्टैब्लिश भी किया है. आई विल टॉक मोर अबाउट इट. तो थोड़ा शुक्रगुजार हुआ करें, वो चीजें देखें जो अल्लाह ने अता कर रखी हैं बगैर किसी मेहनत के भी की हैं तो वो भी तौफीक अल्लाह की है. लेकिन चलो फिलहाल आप छोटे हैं तो कम से कम इतना ही सोच लें कि यार मैंने तो नहीं मांगी थी, आंखें मुझे अता कर दी गई हैं, और ये आंखें देखने वाली आंखें हैं, मुझे बिन मांगे अता किया गया है ना, तो क्या मैं उनका शुक्रगुजार ना रहूं? ये जो अक्ल और जहन और दिमाग और इल्म और मौसम और दरख्त चरिंद परिंद, ये सब जिसको मैं एंजॉय करता हूं, जिसको मैं अपनी लाइफ कहता हूं, ये तो मुझे अता किया गया है. आई हैव बीन गिवन. शुड आई बी थैंकफुल और नॉट? तो देखें ना, आप जब मेरा शुक्रिया अदा करते हैं तो इसका मतलब आप मानते हैं कि मैंने आपको कुछ दिया, तो आजिज़ी आ गई, ह्यूमिलिटी आ गई. ठीक है. अब जब एक बंदा मान ही लेता है रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, मान लिया फकीर हूं, तो फिर मांगेगा सारा कुछ भी. ग्रैटिट्यूड इज अ बिग थिंग. जिसको ये मिल जाए अल्लाह ताला, जिसको ये आपकी उम्र में अता कर देना, क्योंकि कुरान पाक की एक आयत है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम मेरा शुक्र अदा किया करो, मैं तुम्हें और दूंगा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जिसको अपनी लाइफ में कुछ भी मल्टीप्लाई करना है वो शुक्रगुजार बनता जाए, वो और उसको फिर अल्लाह ताला दिखाएंगे कि ऐसे बढ़ने लगेंगी चीजें कि वो हैरान हो जाएगा ये क्या हुआ. बिकॉज हमारे अंदर जो रुकावटें हैं जितनी भी, वो नाशुक्री की रुकावटें हैं. मोस्ट ऑफ देम वी आर नॉट थैंकफुल, वी आर केयरलेस अबाउट आवरसेल्व्स. हम परवाह नहीं है. जो शुक्रगुजार बंदा बन जाता है ना, वो बापरवाह हो जाता है. उसको परवाह होनी शुरू हो जाती है, उसको ख्याल आना शुरू हो जाता है, उसको पता, उसको एहसास हो, जिसको वो वालिदैन कहते हैं तो एहसास नहीं है, वो एहसास आना शुरू हो जाता है. एहसास पैदा होता है शुक्रगुजारी से होता है. शुक्रगुजार दिल जो है वो बेहतरीन दिल होते हैं. इन्नल्लाह युहिब्बुश शाकिरीन. अल्लाह को मोहब्बत है शुक्र करने वालों से. अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, नॉट जस्ट एक्सेप्टेंस, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है इसमें. सो देयर आर, ये रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं बट दे आर वेरी प्रैक्टिकल. ये मजहबी बातें तो हैं लेकिन ये हैं प्रैक्टिकल हैं असल में. तो शुक्रगुजार बंदा बनने की ख्वाहिश करना, उसकी कोशिश करना बहुत आला बात है. और जाहिर है जब शुक्रगुजारी की कैफियत है और बंदा, तो फिर उसी से मांगता है. फिर बंदा जिसका शुक्रिया अदा करता है, जिसको अपना पालनहार मान लेता है, रब पालने वाला, नरिशर, चेरिशर. when we understand के who is actually bringing us up, we realize that, then we seek everything. मतलब एक बच्चा है, उसको ये पता हो कि उसको सब कुछ उसकी माँ से मिलना है, और वो
जानता भी हो कि उसको उसकी मां से मिलना है, तो वो किससे मांगेगा फिर? वो मां से ही मांगेगा। कॉमन सेंस है ये ह्यूमन बिहेवियर का एक नॉर्मल तरीका है। तो शुक्रगुजारी बंदे में और फोर्सेस ऑफ नेचर में और उसके क्रिएटर में, अल्लाह जल्ला शानहू में, एक रब्त पैदा कर देता है, एक हार्मनी आ जाती है ड्यू टू ग्रेटिट्यूड। और मैंने ये देखा है कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी एबिलिटी है जो दुनिया के तमाम रिलीजन्स में प्रोफेस की गई है। इट हैज बीन प्रोफेस्ड इन ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, no matter what the religion is. Why? Because it gives you humility. It takes you away from pride. It helps you resolve your egos. When you become thankful to someone or somebody, especially the creator. जवानों को पीरों का उस्ताद कर। पीर जो है ना, जवान उनके भी उस्ताद बन सकते हैं। सो दर जवानी तौबा करदम शेवा पैगंबरी, ये जवानी जो है इसके अंदर चेंज ले आए। तौबा मीन्स चेंज। दर जवानी तौबा करदम शेवा पैगंबरी, ये पैगंबरों का शेवा है। विच मीन्स दैट इफ यू चेंज इन योर यूथ, यू गो मच हायर, योर डेस्टिनी चेंजेस, इट डज नॉट रिमेन ऑर्डिनरी। सो अपने आप को ऑर्डिनरी मारना है, अवाम ही बना के रखना है अपने आप को, लोअर लेवल पर फौत होना है तो हो जाए, चॉइस तो आपकी अपनी है, जबरदस्ती तो कोई दे नहीं सकता। But I can pray and I can try. That I am doing.